A very good afternoon to everyone. In the previous session, we discussed about the average profits method, and with the help of an example, we understood how we can calculate goodwill through the average profits method. So, moving forward, we'll be doing few numericals just so that the students gain clarity on how goodwill can be calculated. So let us take a very basic example to start with. This is a question where it says that goodwill is to be valued at 3 years purchase of 4 years average profits, and profits for the last 4 years are given to us as below. So we are supposed to calculate goodwill. तो हमारा पहला step यही रहेगा that we will take the average of these 4 year profits, which is 16, 2017, 18, and 19. So we'll add up the profits of these 4 years and divide it by 4 in order to get the average profits. Once we get that, so after doing this, we will be getting the average profits of 15,000 rupees. So once we get the average profits, a simple way to calculate goodwill will be to multiply the average profits with the number of years of purchase. And here in the question, we can clearly see that the number of years is 3 years, 3 years of purchase. So that means we need to multiply the average profits with 3 in order to get the value of goodwill, right? So this is how we are going to do it. So goodwill will be average profits multiplied by number of years of purchase, and average profits is 15,000 multiplied by 3 will give us a value of 45,000. All right. Let us move on to the next question. So here again, this is more or less the same kind of a question for goodwill. We can see that goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profits, but here we need to take the average profits of last 5 years. Now, the another only difference which we can see in this question is that there is a loss of rupees 4 lakhs uh, in the year 2016. How do we cater to this kind of a loss? So in order to cater this loss, what we need to really do is we will add the profits of the 4 years and subtract the loss of 2016 and then divide the resultant value by 5. This will give us the average profits, and once we get the average profits we will multiply that with the number of years of purchase and we'll get the value of goodwill. So I'll just repeat once more. अगर आपका लॉस आ जाता है, मान लो पिछले 4 साल या 5 साल के प्रॉफिट्स आपको गिवन है और उनमें से एक साल में आपका लॉस आ गया, तो आपने उस लॉस को जो 4 साल के प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड कर देना है और जिस साल का लॉस है उस लॉस को आप माइनस कर दोगे. जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसको आप नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड कर दोगे. इन दिस केस इट इज 5 years and you will get the value of average profits. So here we can clearly see in the solution that we've taken 13 lakhs profits for 2015. Then for 2016 we are subtracting 4 lakh rupees because it's a loss. 17 8 lakhs, 9 then 18 15 lakhs, and then 19 8 lakhs. So when we add up all these values, we will get a value of 40 lakhs after subtracting the loss, of course, and 40 lakhs divided by 5 will give us the average profits of 8 lakhs. Now average profits are 8 lakhs ke hain aur number of years of purchase is 3 years as given in the question. Once we multiply the average profits with the number of years of purchase, we'll get the value of goodwill, which will be 24 lakh rupees. Alright, so this is how we will be doing it. I'll just show it to you for your right.
So let's move on to the next one. Next slide will have a much more difficult question to do. So here we have a question wherein Divya is one of the sole proprietors and she has purchased the business of Jyoti. And देखो क्या होता है यहाँ पे कि जब भी कोई फर्म या सोल प्रोप्राइटर फर्म या पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी फर्म का बिजनेस परचेज करती है, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो देखी जाती है कि फर्म की गुडविल कितनी है. तो कभी भी whenever there is a one firm acquiring another firm or purchasing the business of another firm, the goodwill of the firm which is being acquired, that goodwill will be calculated in order to understand कि firm की worth क्या है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो it is just a context, it's just a background given to the students कि Divya is one entity which is purchasing the business of Jyoti, एंड उसको परचेज करने के लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, और पिछले और 3 साल के हमें प्रॉफिट्स इसमें दे रखे हैं. 16-17 के प्रॉफिट्स 1 लाख रुपीज हैं, 17-18 के 1,25,000 है, 18-19 के 1,12,500. नाउ दीज प्रॉफिट्स हैव बीन एडजस्टेड फॉर द फॉलोइंग. तो यहाँ पे द ट्रिक स्टार्ट्स हियर, बिकॉज ये जो प्रॉफिट्स इन्होंने दिए हैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हो रखी हैं. जो 16-17 के यहाँ पे यू एवरी स्टूडेंट प्लीज फोकस इन दिस पार्ट एट दिस पार्ट. तो यहाँ पे क्या बोला कि एबनॉर्मल गेन 12,500 का जो था वो 16-17 के प्रॉफिट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000 फॉर 17-18 प्रॉफिट्स हैज बीन सब्ट्रैक्टेड ऑलरेडी, एंड 18-19 का जो प्रॉफिट्स आप देख रहे हैं 1,12,500, इसमें अभी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को एडजस्ट नहीं किया है, उसको एक्सक्लूड कर रखा है. तो हमें बेसिकली ये एडजस्टमेंट हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस. Abnormal gain is basically a kind of a profit which is earned by the firm, uh, and it's basically not on a regular basis. तो ये हमें ध्यान रखना है, जो एबनॉर्मल गेन होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है. यानी कि मतलब ये है कि फर्म 4 साल या 5 साल या 10 साल में एक बार कभी कोई प्रॉफिट कमा लेगी, एंड दैट प्रॉफिट विल नॉट बी रिलेटेड विद द मेन बिजनेस ऑफ द फर्म. तो दो चीजें हो गई, एक तो नॉन रिकरिंग नेचर है, और दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो प्रॉफिट फर्म अर्न करती है वो उसके मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है. ठीक है. सो एबनॉर्मल गेन जो होता है जब वो फर्म के मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको प्रॉफिट में इंक्लूड करना फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल इज नॉट राइट. तो समझो इसको, जैसे कि मान लो देयर इज अ कंपनी और देयर इज अ फर्म which is into the business of selling motor vehicles, right? Now this firm, you can take any example, right? This firm, this company has a very huge building, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है इनके पास जो ऐसी खाली पड़ी हुई है, और ये लोग उस बिल्डिंग को यूज भी नहीं कर रही, ये कंपनी उस बिल्डिंग को यूज भी नहीं कर रही. तो कंपनी ने क्या कहा कि भाई ये जो बिल्डिंग है इसको हम रेंट पे दे, इसको हम सेल ऑफ कर देते हैं, राइट? लेट अस सेल इट ऑफ, और जो भी पैसा आएगा वो हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर लेंगे. सो इफ द कंपनी सेल्स ऑफ दिस बिल्डिंग, और बिल्डिंग को सेल करने पर कंपनी को बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ठीक है? तो वो जो प्रॉफिट कंपनी ने बिल्डिंग को सेल करने पे अर्न किया है, दैट इज बेसिकली एन एबनॉर्मल गेन. क्यों? क्योंकि उसका मेन बिजनेस तो मोटरसाइकिल्स बना के बेचने का है, ठीक है ना? तो इसीलिए एबनॉर्मल गेन जो है वो मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हमें एक्सक्लूड करना होता है, एडजस्ट करना है करेक्ट प्रॉफिट्स निकालने के लिए. एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस फर्म के मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होगा. फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ गुड्स, यू नो, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. अब किसी कंपनी में या उसकी ये जो फैक्ट्री है उसमें हर साल तो फायर, आग नहीं जलती होगी, ठीक है जी? और ये भी नहीं होता होगा 4 साल में या 5 साल में एक आधी बार कभी फैक्ट्री में ड्यू टू सम रीजन आग लग गई, और मे बी इन दैट पर्टिकुलर कंपनी हर साल तो वहां पे उनकी फैक्ट्री में नेचुरल डिजास्टर नहीं होता होगा.
ठीक है, 5 साल में या 4 साल में एक आधी बार नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है। सो नॉन रिकरिंग नेचर है, लॉस का भी नॉन रिकरिंग नेचर है। सेकेंडली वो मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है मशीनरी खराब हो गई बिकॉज ऑफ मशीनरी डैमेज हो गई, या लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हो गया, या गुड्स लॉस ड्यू टू पिल्फरेज हो गया। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर यू नो लॉ एबनॉर्मल लॉस आल्सो। तो एबनॉर्मल लॉस क्या करता है, प्रॉफिट को कम कर देता है, जबकि उससे मेन बिजनेस एक्टिविटी पे, फर्म की मेन बिजनेस एक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हम इस एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक करते हैं, वी ऐड दिस एबनॉर्मल लॉस बैक टू द प्रॉफिट्स। When we have to calculate goodwill and we need to know the correct profits, we subtract abnormal gain, ठीक है। अब आती है बात 18-19 की, 2018-19। 2018-19 में 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, जो कि नहीं किया गया है, but it has to be paid by the firm. Therefore, this 12,500 rupees need to be subtracted from the profits of 2018 and 19. Let us see the solution to understand this question better. Here we go. So we are given the profits in the profits of the firm are already given to us, right? तो हम इसका एक vertical form में ऐसे format बना सकते हैं, and profits which were given to us in the question हमने लिख दिया, ठीक है। जो सारे profits, जो 3 साल के profits हैं firm के, हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर adjustments, so these are the adjustments which we are doing for abnormal gain and abnormal loss. If you see carefully, यहाँ पे -12,500 जो है ये abnormal gain है, जिसको हमने subtract किया है 16-17 के profits में। 17-18 के profits में से हमने add किया है abnormal loss 25,000 का, right? और 18-19 के profits में हमने जो प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, वी हैव सब्ट्रैक्टेड दैट इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। तो हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं इन द सेंस दैट वी आर ट्राइंग टू गेट आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रॉफिट्स। आफ्टर दिस एडजस्टमेंट वी गेट द प्रॉफिट्स फॉर ऑल दीज 3 years, द करेक्ट प्रॉफिट्स, you know, after adjusting for the abnormal losses and gains. These are the profits. Once we get the right profits, the correct profits of the firm, we will find out the average profits. And this is how we find out the average profits. We'll add 87,500 with 1,50,000, and we'll add 1 lakh to it. And after adding all these three profits, adjusted profits, we will get the sum and we'll divide this by 3 and we'll get the average profits. Here it comes out to be 1,12,500. Once we've got the average profits, we are just supposed to calculate the goodwill, and the goodwill of the firm will be 1,12,500 average profits multiplied by 2. All right. Let us understand this question once again. इसमें यहाँ पे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। So if I have to tell you this, कि देखो ये 1,25,000, 1,12,500 के जो प्रॉफिट्स थे तो हमें दे रखे थे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 12,500 का फर्म को एबनॉर्मल गेन हुआ है, ठीक है, जो कि फर्म के मेन प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है। तो हमें इस एबनॉर्मल गेन को फर्म के प्रॉफिट्स में से माइनस करना है। तो हमने इसको माइनस कर दिया, क्योंकि ये फर्म के मेन बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट्स नहीं है, हमने इसको माइनस कर दिया यहाँ पे। सो वील गेट दिस वैल्यू। When we talk about the year 2017-18, in this there was an abnormal loss of 25,000. Now this abnormal loss could be due to loss of stock by fire, it could be due to some natural disaster, right? जो कंपनी के या फर्म के मेन बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, तो इट इज काइंड ऑफ अनफेयर टू जज अ कंपनी की जस्ट बिकॉज देयर वाज अ नेचुरल डिजास्टर, है कि नहीं। अगर हम बोलते कि कंपनी को लॉस हो गया और वहां पे नेचुरल डिजास्टर था, तो हम अगर ये परसेप्शन बना लें कि ये कंपनी अच्छी कंपनी नहीं है, सो दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज कंपनी की गलती थोड़ी है नेचुरल डिजास्टर हुआ है। तो कंपनी तो अपनी तरफ से अपने काम पे पूरा फोकस कर रही है, अच्छे से गुड्स बना रही है। तो इसीलिए हमें जब भी कोई एबनॉर्मल लॉस होता है उसको ऐड बैक करना होता है प्रॉफिट्स में,
to get the right amount of profits, because abnormal loss are not regular basis, one, and they do not reflect the correct position of the company with respect to the profits earned, right, the real performance of the company. देन थर्ड में देखेंगे तो ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसमें उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस प्रीमियम था प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो पे किया गया है, लेकिन प्रॉफिट्स में से एडजस्ट नहीं हुआ, तो उसमें कुछ नहीं करना, वी आर जस्ट सिंपली गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम हियर टू गेट द राइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. So once we've got the adjusted profits, we will add the adjusted profits, divide the adjusted profits by the number of years, and we'll get the value of average profits. Once we've got the average profits, we'll multiply the average profits by the number of years of purchase, and this will give us the value of goodwill. So very simple, straightforward. So in today's class, we've done two very basic, simple questions of uh, calculating goodwill through the average profits method. And the third question we've done it basically includes certain adjustments related to abnormal loss and abnormal gain. I hope you found the video useful. In case you have any doubts, any queries, you can comment on my video, or you can send me a message. My number is already given in the description, and you can get in touch with me, and I'll be happy to resolve your doubts. Thank you, everyone. Uh, have a great day.